everyone from Bonnie, Scotland. आज हम क्या बात करने वाले हैं ग़ज़ाला आपको बताएंगी टार्टन के बारे में और टार्टन के बारे में पहले हम बताएंगे our lovely viewers. As you can see, we are wearing two different colours. I'm wearing blue and white, which represents Scotland. And I'm wearing green and white, which obviously represents Pakistan. And because we are Scotistanis, so we thought कि हम आज दिखें भी Scotistani. So that's the Scot part in Scotistani, and I'm the Tani part. Okay, and then it's probably worth just saying a little bit about the weather. We're approaching autumn, aren't we? But it's still very mild and beautiful. Yeah, a lovely autumn morning, a lovely autumnal morning. Yes, and it's not raining either. Raining, and it's quite mild, like you said. Yes. So we are going to talk about clans today, Scottish clans. We are. और जैसा कि हम कहते भी रहते हैं अपने vlogs में कि Scotistani पे it's not just about traveling to nice places. It's also about what? Culture. Culture and history. हम चाहते हैं कि स्कॉटलैंड और पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में भी हम बात करें और इन दोनों कंट्रीज का जो इतना वाइब्रेंट और रिच कल्चर है उसके बारे में भी हम बात करें. And I guess the thing, Anila, is that it's all about the tartan, isn't it? Absolutely. And what is tartan? Tartan, how tartan is described is basically it's bands of vertical and horizontal stripes in multicolours. So, for example, here's a little hat. And here's a scarf in my favourite colours. Yes, and Anila, can I also point out, viewers, that all this collection is not mine. It's this lady's here, this woman's here. So and you can tell that I love tartan. Yes. And Harris tweed as well. And can I just show them this as well, that she's actually got Scotistani printed on a lovely tartan scarf. So what is your love and fascination with tartan, Anila? ओके वो मैं बताती हूँ लेकिन पहले आप हमारे जो लवली व्यूअर्स हैं उनको टार्टन के बारे में थोड़ा सा बताने वाली थी जी तो आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट टार्टन इट्स relevance or significance to Scotland, Scottish history, and then I'll share a wee bit about my fascination or my love with tartan and Harris tweed. So the thing with tartan is that it's been around for a long time, hasn't it? It's been around for thousands and thousands of years, but the connection with Scotland is very much a strong cultural connection where Scotland have adopted this fabric, and it means many things to people, doesn't it? Mm-hmm. So, for example, we know that there's something like, and we know this because we've just done a bit of research around this, is that there's something like about 500 clans with different names like Gordon, Crawford, Fraser, MacDonald, Campbell. Exactly. Yeah, those are the more common ones, aren't they? So 500 clans with different tartans really is quite interesting, isn't it? It is indeed. लेकिन ये भी थोड़ी सी बात करते हैं ना कि अब ये तो क्लान बेस्ड जो सोसाइटी थी स्कॉटलैंड अभी भी हैं क्लान्स लेकिन अब वैसे नहीं है जैसे आज से 400-500 300 years ago बड़ी स्ट्रॉन्ग एक क्लान कम्युनिटी होती थी. Obviously with time progress tribal societies जो हैं सारी दुनिया में ही अब आहिस्ता आहिस्ता 21st century या modern times में आकर obviously उन्होंने वो values और वो ways of life adopt कर लिए हैं. Yes, and the interesting thing is that I think as far as from what I was reading, there's no rule in terms of which tartan you take on, but generally speaking, people tend to take the tartan from the geographical area that they actually belong to. So they will generally go with that particular tartan, but otherwise people tend to nowadays certainly mix and wear the tartan they want to wear. Or even अब Scotland में बहुत सारी communities आके settle हो गई हैं different cultures से, different countries से और उनके भी अब tartans हैं like Muslim community का एक tartan है, Sikh community का tartan है. Yes. So ये ऐसी चीज़ नहीं है कि which is set in stone, right? Yes. एक evolving aspect है इनके culture का और ये जिसमें के और different new cultures को भी amalgamate कर लेते हैं. Yes, and I think that's really positive because it is about inclusion. It's about ensuring that even people that are minorities within that community feel that they're part of being Scottish.
And interestingly, जो उन्होंने थोड़ी सी सर्वे किया था, उस सर्वे में कह रहे थे कि the people who are Muslim tend to identify themselves as Scottish first and then as Muslim. So for that reason also, I think there was possibly people felt let's create tartan around Muslim communities. Yeah, absolutely. और ये भी मैं कहना चाहती हूँ ग़ज़ाला कि स्कॉटिश पाकिस्तानीज़ जो स्कॉटलैंड में हैं वो स्कॉटलैंड की लार्जेस्ट नॉन वाइट माइनॉरिटी कम्युनिटी है. Yes, they are. तो ये बहुत अच्छी बात है कि मुस्लिम कम्युनिटी का टार्टन है, लेकिन मुझे रियल खुशी उस दिन होगी जब एक स्कॉटिस्तानी टार्टन भी होगा, पाकिस्तानी टार्टन, बिकॉज हम जानते हैं कि पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स भी रहते हैं. सो ऑब्वियसली वो जो मुस्लिम टार्टन है वो पाकिस्तान के जो नॉन मुस्लिम हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं और उनको तो वो ऑब्वियसली वो रिप्रेजेंट नहीं करता ना. सो होपफुली वन डे वी विल हैव अ पाकिस्तानी टार्टन एज वेल. Yes. अच्छा, आपको पता है हम क्लैंस की बात कर रहे थे ग़ज़ाला. डू यू नो व्हाट the word clan means? From my research, Yes. I know that it means family and children. और ग़ज़ाला आपको पता है कि पाकिस्तान में कुछ रीजन्स हैं जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जहाँ पे अभी भी ट्राइबल कल्चर इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ द सोसाइटी ऑफ दैट पर्टिकुलर यू नो कम्युनिटी. लेकिन वहाँ पे भी ऑब्वियसली आज से 500 या 300 ईयर्स पहले ये ट्राइब्स जिस तरह रहते थे और जो इनकी वैल्यूज़ थी इन जगहों पे भी वो चेंज हो रही हैं. ज़ाहिर है मॉडर्निटी जो है वो हर जगह पे अपना impact लेकर आती है. Yes. And you know the other thing I just wanted to mention, because I'm a huge fan of the late Alexander McQueen, he used actually a lot of tartan for some of the collections that he made, and I think they've been displayed in the past in the Met Museum. But yeah, I really love he's just very forward thinking, and he's one of the most creative fashion designers. आपने मुझसे पूछा था ग़ज़ाला मुझे क्या fascination है yes, tartan please के tell साथ. us, please do tell us. So you were talking about your passion for tartan. My passion for tartan, you can see it with your own eyes. So tartan मुझे बचपन से बहुत पसंद है. जब मैं छोटी थी तब मुझे नहीं मालूम था कि इसको tartan कहते हैं. तब मुझे ये पता था कि ये चेक है. मॉम मुझे चेक वाला वो बना दे ट्यूनिक या चेक का जैकेट बना दें. और जब हम छोटे थे तो जो मिलिट्री बैंड्स होते हैं ना पाकिस्तान में वो ये टार्टन और सारा केप और वो बैक पाइप्स वगैरह बजाते थे. एंड आई यूज्ड टू लव दैट. तो ये टार्टन का मुझे वहाँ से बहुत मैंने पिक किया. बट ऑब्वियसली देन आई डिडंट नो दैट दिस इज़ टार्टन. जब मैं बड़ी हुई फिर मुझे पता चला, बल्कि बड़ी भी क्या हुई जब मैं स्कॉटलैंड आई, देन आई फाउंड आउट कि भाई ये टार्टन होता है और इसकी स्कॉटलैंड के साथ क्या कनेक्शन है. एंड देन बस फिर मैंने टार्टन कलेक्ट करने शुरू किए. और ये वाला जो था ना, ये बचपन से ये वाला Stuart Royal. ये वाला जो टार्टन है वो बैंड होता था, उसके बैक पाइपर्स ने और जो ड्रम बजा रहे होते तो उन्होंने पहना होता था. तो उस वक्त क्या पता था हमें. और फिर देखें क्या खुदा का करना हुआ कि आई एंडेड अप इन स्कॉटलैंड. और अब बस मैं यही करती हूँ कि मैं जहाँ भी जाती हूँ आई लव कलर्स, आई लव टार्टन. मुझे हैरिस ट्वीट भी पसंद है. और आपने ये मेरी टैम ओ शैंटर हैट देखी है? टैम ओ शैंटर पोएम भी मुझे बहुत पसंद है. I love that poem, it's so amazing. तो इसलिए ये जो टार्टन की मैंने हैट पहनी हुई है, इट्स अ Tam, I don't know actually. Yeah, tam भी कहते हैं, tammy भी, tam o shanter. Yeah, Anila, that's actually news to me, because I honestly didn't know that you loved this pattern from when you were a little girl. Yes. And then you happened to be in Scotland, and therefore this explains your passion, your obsession with tartan. Absolutely. देखिए ना वो मेरा childhood का जो love था और check मैं कहती थी check वाले कपड़े चाहिए मुझे, check वाले. वो मेरा check वाला जो लव था और पैशन वो स्कॉटलैंड में आके और ग्रो हुआ. और now I can buy nice tartan scarves, hats. वैसे ये हैरिस ट्वीट
है yes. और ऑब्वियसली ये भी चेक का पैटर्न है, लेकिन हर स्ट्रीट के बारे में हम बात एक और व्लॉग में करेंगे। अनिला, अम्ब्रेला घुमाने में तो स्पिन करने में तो मुझे बॉलीवुड की याद आ रही है, and your connection to Bollywood, your love. Yeah, I have no connection to Bollywood apart from that I like Hindi cinema and Hindi movies and Hindi songs. और बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मुझे भी याद आ रहा है पुरानी जो ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स होती थी, उसमें जब कोई रोमांटिक सीन होता था, हीरो और हीरोइन गाना वाना गा रहे होते, तो उसमें भी इस तरह अम्ब्रेला की स्पिनिंग वो यूज़ करते थे। Exactly. Well, we hope this was a useful session for you, learning about Scottish tartan as well as Anila's obsession, to the point that she's even got like at least 6 umbrellas like this in different colours. So goodbye from me, and I shall see you soon. Bye. Before I go, like I always say, subscribe to Scoristani's YouTube channel, and when you get a chance, do comment, like and share. Take care and bye-bye. Oh no, Ghazala, you can't take my scarf.